So good afternoon, everybody, and welcome to Motilal Oswal's live trading session. Just give me a confirmation in the chat box if I'm clearly audible and clearly visible. So yes, we have a confirmation from Girish ji. So thank you for your confirmation, guys, and welcome once again to Motilal Oswal's live trading session. I am Parth Bhatt and I'll be your host for the day. So जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े उनको मैं बता दूं, मोतीलाल ओसवाल 2 लाइव ट्रेडिंग सेशंस करती है दिन में. The first live trading session is in the morning at 9:30 a.m. and the second session, that is जो आप जिस सेशन में अभी आप हमसे जुड़े हुए हैं, this is our afternoon trading session जिसमें हम लोग फोकस करते हैं उस पर्टिकुलर दिन के इंडेक्स की एक्सपायरी पे. तो सिंस आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो अर्पित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिसर्च टीम से. Arpit sir has been a part of Chandan sir's team since a very long time and has given us so many profitable expiries. So welcome to Arpit sir. Yeah, very good afternoon, guys. Before starting the session, just want to know my voice is audible? Yes, Arpit, you're audible. Okay, so I'll just share the screen and we'll then start in just a couple of minutes. Yeah, Parth, can you just let me know the screen that I've shared, is it visible? We are still on the Stockholm screen, sir. So if you can, yes, now it's visible. Okay, the chart and everything is visible, right? Yes. Great. So very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty monthly expiry, and definitely everyone would be eagerly waiting for Bank Nifty trade setup. And today being monthly expiry, so even we are looking out for trades. However, देखें तो मोमेंटम काफी स्लो है मार्केट में, स्पेशली बैंक निफ्टी में. ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक रेंज में है, बट बिफोर दैट आई जस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद निफ्टी. सो निफ्टी स्केलिंग न्यू रिकॉर्ड हाइज. एक दो दिन पहले हमने नया रिकॉर्ड हाई देखा था, एंड पोस्ट दैट निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन 24,800 to 25,000 मार्क्स. द गुड पार्ट इज दैट कि निफ्टी अपर बैंड पे होल्ड कर रहा है एंड काफी आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है निफ्टी में ओवरऑल सेटअप वाइज देखे तो. सो निफ्टी का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है. हम क्लियरली देख सकते हैं बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, whereas निफ्टी इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई टेरिटरी एंड ऑल सेट टू हिट न्यू हाइज इन कमिंग सेशंस. सो पहले हम निफ्टी के बारे में अगर बात करें, सो 24,850 एक मेजर सपोर्ट है, 24,800 जोन एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी में. अपर बैंड में 25,200, 25,350 इज द अपर बैंड ऑन द रेजिस्टेंस साइड. अगर हम अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो बैंक निफ्टी एक बड़े मूव के बाद मंडे को इस वीक में, उसके बाद एक साइडवेज हो गया है 400 से 500 पॉइंट की रेंज में. सो अगर हम चार्ट भी अगर देखें, सो इफ आई जस्ट ओपन अप द चार्ट फ्रॉम पास्ट 3 days, it is just consolidating in narrow range of almost 300-400 points. So intraday swings हमें आ रहे हैं. Immediate basis पे 51,250 बैंक निफ्टी में immediate support है. अपर बैंड में 51,650, 51,750 is the hurdle zone. So बैंक निफ्टी में क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस है, वो हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं. आज एक्सपायरी डे है, मॉर्निंग से हमारा बायस पॉजिटिव रहा है, विद कीपिंग दिमाग में कि 51,300 इंट्राडे सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, बट एट द सेम टाइम अगर अपर बैंड देखें तो 51,600 एक रेजिस्टेंस जोन है. सो आर्ली स्केल अगर हम देखें बैंक निफ्टी में चार्ट वाइज, सो 51,300 इज अ सपोर्ट जोन, अपर बैंड 51,550, 600 इज अ रेजिस्टेंस जोन. सो काफी देर से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. सुबह थोड़ा सा हमने मूव देखा था बैंक निफ्टी में, उसके बाद एक लैक क्लस्टर हो गया. सिमिलर वे ऑप्शन बाइंग में अगर देखें, सो ऑप्शन बाइंग के जो मोमेंटम है ज्यादा है नहीं, बट स्टिल विल ट्राई टू लुक आउट फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेटअप. ओवरऑल बायस हमारा पॉजिटिव रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी में काफी आउट परफॉर्मेंस है. और बैंकिंग स्पेस में अगर देखें चार्ट वाइज, सो एचडीएफसी बैंक एक ओवरऑल रेंज बाउंड है, आईसीआईसीआई बैंक भी एक मोमेंटम में नहीं है, तो मेजर हैवी वेट्स में ज्यादा कश नहीं है, जिसके वजह से एक रेंज में फंसा हुआ है. स्टिल विल ट्राई टू फाइंड आउट ट्रेड्स. इमीडिएट बेसिस लेवल वाइज में हम मेंशन करेंगे 51,300 बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन है, अपर बैंड में 51,550, 51,600 इज द रेजिस्टेंस जोन. सो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में. अब इसी के साथ अगर हम बात करें वीकली वीवैप, अगर वीकली वीवैप भी देखें बैंक निफ्टी का, so बैंक निफ्टी का वीकली वीवैप इज अराउंड 51,650 लेवल्स.
जो एक इंट्राडे हर्डल की तरह काम कर रहा है, और मंथली व्यू है 52,200 है, जो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 800 पॉइंट उसके नीचे है। तो ये जुलाई सीरीज रिलेटिवली एक अंडर परफॉर्मेंस रही है बैंक निफ्टी के लिए। अपार्ट फ्रॉम 2 to 3 ट्रेंडिंग डेज, बाकी दिन एक रेंज बन रहा है बैंक निफ्टी का ओवरऑल सेटअप वाइज, जिसके वजह से नेकेड ऑप्शन बाइंग में मेजर ट्रिगर नहीं रहे। बट हैविंग सेड दैट, अगर अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है लास्ट हाफ एन आवर में गोइंग फॉरवर्ड, सो डेफिनेटली विल प्ले। ओवरऑल बाइस हमारा बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है टू कंसोलिडेशन, निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है। सो एज ऑफ नाउ हम बाइस पॉजिटिव की तरह ही प्ले करेंगे। इमीडिएट बेसिस पे हम दो स्ट्राइक ट्रैक कर रहे हैं, 51,400 कॉल बैंक निफ्टी में and 51,400 put. So both the strikes we are tracking. I'll just repeat. Bank Nifty overall bias is positive with support of 51,300. Upside में 51,550, 51,600 का hurdle है। इसको प्ले करने के लिए हम दो स्ट्राइक्स अभी एज ऑफ नाउ देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के कॉल साइड में 51,400 एंड अलोंग विद दैट 51,400 का पुट भी लगाया है टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेटअप वाइज। अलोंग विद दैट, सो दिस इज द सेटअप वाइज फॉर द बैंक निफ्टी वाइज। काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स में है। सो व्हाट वी कैन डू पार्थ, वी कैन टेक कपल ऑफ स्टॉक क्वेरीज एंड वी विल आल्सो शेयर BTST आइडियाज और डिलीवरी आइडियाज, एंड देन एज पर द सेटअप वाइज इन द बैंक निफ्टी विल अपडेट ऑन इट। Sure. I think the first stock query that we have is on Birlasoft. Okay, I'll just say, so today I think it has come out with this result, and post result we have seen some correction in the stock. Setup wise, if we see overall, 670 is a major support zone on weekly scale. If it closes below 670, I think we can see some pain towards 650 levels. So daily basis पे थोड़ा सा breakdown देखा है हमने 50 डेमा के नीचे, and I think 670 की क्लोजिंग के नीचे 640 तक हमें करेक्शन दिख सकता है। So overall थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉज में है, अपसाइड में 700 का हर्डल है। Sure. And sir, if we can have an update on our intraday calls, sale was one of our intraday calls and NCC was the another call. Yeah, so I'll just check sale. If we see overall setup wise, metal stocks has seen some recovery from low levels. Sale भी देखे तो नीचे डिप मारने के बाद हमने अच्छी रिकवरी देखी, और आर्ली स्केल भी देखे तो एक फ्रेश रेंज ब्रेकआउट दिया 150 के वन के ऊपर। सो आई थिंक सेटअप वाइज हमें ये थोड़ा सा मूव दिख सकता है 153 155 तक का। सो सेटअप वाइज सेल इज गुड फॉर 154 155 मूव। सेकंड वन वाज NCC, राइट? Yes, NCC. I'll just take the chart. NCC classical pole and flag breakout on daily scale, and I think intraday wise, positionally wise एक range breakout देखा है। So हमें लग रहा है 370 375 तक का भी मूव दिख सकता है अगर ये 2 से 3 हफ्ते का व्यू है। इमीडिएट बेसिस पे डेज हाई की तरफ ही है, सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट हो जाएगा इमीडिएट बेसिस पे 349 का फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 365 प्लस लेवल्स। Okay. The next query we have is on IRFC, bought at 219. 219. Okay, so if I see IRFC has seen some correction from higher levels. 219 is a buying price. So if I see all this chart setup wise, 50 डेमा अगर हम चार्ट भी देखें तो 50 डेमा से ब्यूटीफुली होल्ड कर रहा है, नीचे से रिकवरी भी हमने देखी है। सो एक बेस बना है 185 188 के अराउंड। सो हमारा व्यू ये रहेगा, ऊपर के लेवल पे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, सो ये लेवल पे ऐड करना चाहिए तो एवरेज रिड्यूस हो जाएगी। स्टॉप लॉस रहेगा 185, धीरे धीरे हमें 205 210 तक का मूवमेंट दिख सकता है। श्योर। और सर काफी लोग जियो फाइनेंस के बारे में भी पूछ रहे हैं, काफी लोग उसमें फंसे हुए हैं लंबे टाइम। Yes, absolutely. We have been quite bullish on the counter, but from past couple of weeks, the nature of the stock has been on the downtrend side. Definitely, guys, there would be some pickings. So level wise, there's some downtick in past couple of weeks. So JioFin में ऊपर में 340-45 मेजर हर्डल है, नीचे सपोर्ट की तरफ आ रहा है 315 का। So I think already स्टॉक एक डाउनट्रेंड में है, so wait for any major reversal. ऐड मत करिए फ्रेश क्वांटिटी, वेट फॉर एनी मेजर रिवर्सल। 335 के ऊपर ही कोई मेजर चेंज इन ट्रेंड रहेगा, सो वेट। इमीडिएट बेसिस पे 315 एक मेजर सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर रहता है कंटिन्यू टू होल्ड। और सर डिफेंस स्टॉक्स में भी काफी एक चैटर था जो अभी थोड़ा बहुत डाई डाउन होते दिख रहा है। सो पीपल हैव बीन स्टक विद BEL, HAL. Yeah. So before that, Parth, I'll just look at the Bank Nifty setup once again, and we'll discuss the defense setup post that. So if I'll see any opportunities are there, so I think that would be better. So I'm just tracking once again the Bank Nifty chart also. How does it shape it out? If I see the intraday chart, it is trading in between 350 to 450. And if I look at the strikes, so हमने जो strike
के बारे में डिस्कस किया था। 51,400 कॉल हम देख रहे थे और इसके साथ 51,400 पुट भी देख रहे थे। सो इंट्राडे चार्ट पे अगर देखें तो थोड़ा सा नीचे से रिकवरी आई है, बट सेम टाइम पे ऊपर फॉलो बाइंग नहीं है। सो एज ऑफ नाउ विल कंटिन्यू टू सी कि सेटअप वाइज में हमें कौन से स्ट्राइक से प्ले करना है। बट इसके साथ हम एक और चीज देख सकते हैं, 51,400 का कॉल अभी 100 चल रहा है और 51,400 का पुट अभी चल रहा है 43। सो स्टिल इट विल बी अ वेट एंड वॉच अप्रोच सो फार, बट डेफिनेटली विल अपडेट। जैसे भी कोई मोमेंटम रहता है तो हम अपडेट करेंगे। कमिंग बैक टू द क्वेरी फॉर डिफेंस पार्ट फॉर ऑल आवर यूजर्स, सो डेफिनेटली ये मार्केट जैसा है, ओवरऑल एक बड़ा तेजी वाला मार्केट है और उसमें बुल मार्केट में जनरली ये होता है कि सेक्टर रोटेशन काफी फास्ट होते हैं, काफी सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं, देन दे गो इन अ कंसोलिडेशन फेज। सिमिलर थिंग हैज हैपेंड विद डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स। So if you see overall defense wise, the bigger trend of the stocks of HAL, BL is still strong. So sideways हो गए हैं, but बड़ा trend still positive है। I would suggest कि अगर आपका व्यू है 3 months 6 months के हिसाब से, so continue to hold these stocks. There is no major change in structure. इमीडिएट बेसिस में थोड़े से कूल ऑफ हुए बिकॉज बाकी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, ऑटो स्पेस, फार्मा, आईटी, सो सेक्टर रोटेशन काफी फास्ट हो रहा है। विद अ बिगर ट्रेंड व्यू, कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक्स। कोई भी डिप अगर आता है एचएएल बीएल में, सो हमारी फ्रेश बाय करने की सलाह रहेगी डिफेंस स्पेस में। Sure. I think a lot of people have queries on, कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम मिस कर दिया। So guys, a simple explanation is कि जब तक रिस्क रिवॉर्ड हमें ठीक नहीं लगता है, we will not take any expiry calls because these are high risk calls. तो जब तक रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठता है, we will not take any position in bank nifty or any other index for that matter. So please be patient. जब सही मोमेंट दिखेगा, जब सही अपॉर्चुनिटी आएगा, our expert will definitely give a call. Definitely. Also, in the meantime, for the trade, we have given one BTST idea, that is IDBI Bank. So, if I see IDBI chart structure also, if I just open, एक बड़ा अपटिक हमने देखा है ऑलमोस्ट 15 हफ्तों के बाद। रेंज ब्रेकआउट देखा हमने 98 के ऊपर। सो हमारा BTST फर्स्ट रहेगा 103 से 104 की रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 101 का, अपसाइड में 110, 113 के लिए बाय कर सकते हैं। IDBI BTST आइडिया भी स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ पोजिशनली भी काफी मंथली पे रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। सो वन ट्रेड दैट वी हैव गिवन इज IDBI. Along with that, if we see about the sectors wise also, insurance space is looking very promising for August series. HDFC Life, ICICI Pru. So I think sector wise play करना है यहाँ से 5 to 7% अल्फा जनरेट करने के लिए। So ICICI Pru and HDFC Life would be a preferred pick within the insurance pack. BTST हमने शेयर किया है, and let us revisit to the Bank Nifty setup. And definitely Parth rightly mentioned कि एक movement miss किया, but if we see the chart wise, we haven't seen much movement. Yeah, 60 to 70 points move we have seen in Bank Nifty, but generally वो important रहता है कि हम इसको strategy के through कैसे play out करें. So I'm still tracking and Bank Nifty spot is quoting around 51,400 के around, and हम वही देख रहे हैं कि क्या risk reward favorable रहेगा जिसके वजह से हम play कर सकते हैं. So we are closely tracking and definitely will update, या तो naked direction के through or through strategies we'll try to come up with some setups and we'll update on it. अगर आप intraday chart भी देखें, since Bank Nifty का almost from past 1.5-2 hours it has been sideways, एक थोड़ा सा move आता है and then it again goes sideways. So we are closely tracking. Definitely guys, opportunity रहेगी तो हम update करेंगे. Also I'll just look for some strategy, अगर कोई strategy हम play कर सकते हैं तो. So I'm just checking out the strikes, and if I see these setups also, strategy wise, yeah, so 51,400 call if I see is around 100 rupees, and 51,300 put is around 13-15 rupees. So I'm still checking any setup would be favorable or no, because आज का जैसे जो expiry रही है, जनरली मंथली में कभी कभी बड़े मूव्स आते हैं और हम सजेस्ट भी वही करते हैं क्लाइंट्स को, बट सो फार इट हैज बीन ऑन अ डल नोट एंड ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा हमने मोमेंटम देखा है. सो वी आर ट्राइंग टू प्लेइंग आउट विद दैट. इन द मीन टाइम कोई भी सेटअप रहेगा, डेफिनेटली विल अपडेट ऑन द बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस एंड एज वेल एज ऑन स्ट्रेटजी. So Arpit sir, can we have a stock query or would you continue to track the Bank Nifty? Yeah, just give me a second, part. Actually, I'm just looking out because
we are just looking out for the setup. Sure, Just give sir. me a couple of minutes. So I'm trying if we can get some opportunity and try to make most of it, because जितना clients eager है trade के लिए, even we are eager to give the trade, but our risk mechanism and a setup favorable is very much important. Because काफी बार जब हमें confusion रहता है तो हम trade नहीं भी देते, because तब पैसा नहीं बनता है. मोमेंटम रहे या नहीं रहे, तो आज भी एक ऐसा है जिसमें सेटअप मिक्स है. मॉर्निंग के शो के टाइम पे भी बैंक निफ्टी एक डल था, अभी थोड़ा सा स्पाइक दिखा रहा है. सो विल जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स. इन द मीन टाइम वी आर जस्ट चेकिंग आल्सो. However, we can take stock query in the meantime, and then we'll update. Sure. So Sunita is asking about lemon tree. Lemon tree, yeah. So lemon tree overall, if we see the broader market has been quite good, and if we see the chart setup wise also, lemon tree weekly it has been trading in a range. I think a breakout above 154 will be clear for 150 at 160. So अगर किसी को ब्रेकआउट प्रीएम करना है तो आप ये लेवल पे ले सकते हैं 147 का स्टॉप लॉस रख के, और मेजर ट्रिगर होएगा 154 के ऊपर फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 160 लेवल्स. Yeah. So if I see the bank nifty also 51,400 call I'm tracking, there is seems some momentum, but I'll just check the strike. So what we can do is 51,400 call we are tracking as of now. It is quoting around 105 levels. And if I see the setup also on the hourly scale, it is from a base around 47, 48 levels. And if you see the spot also, it is quoting around 107, 108 levels. So what we can do is we can go with a strategy in which what we'll do, we'll buy 51,500 call. I'll repeat, 51,500 call and 51,400 put. But I'll repeat the strategy. Sure, sir. In which we can go with bank nifty spread, a long triangle, in which we'll buy 51,500 call and we'll buy 51,400 put. Right now the costing is around 95 points, so one can go long in between 90 to 95 points, keeping stop loss of 55 for an upside move towards 135, 150 levels. So I'll again repeat, one can go with bank nifty long triangle by buying 51,500 call. So अभी right now premium चल रहा है 52.35. So right now around it's quoting around 80-85 points. So 80 से 90 की रेंज में है, क्योंकि दोनों प्रीमियम थोड़े से वेग रह सकते हैं. So 80 से 90 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 50 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 135 और 150 के टारगेट के लिए. I hope part this is clear. Yes, yes. So अगर हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में समझ नहीं आया, I think people are also asking, you know, हम लोग दोनों क्यों देते हैं पुट एंड कॉल. So guys, we do it because हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में मोमेंटम होगा. कौन से साइड पे होगा, whenever we are not sure, if you want to play the momentum, if you want to play the volatility, that is when we initiate long triangle. I'm sure Arpit sir will also explain it better. Yeah. So as rightly said by Parth, the thing is overall if we see the major momentum is not there, but generally the nature of the bank nifty instrument is such that it tends to give a spike of 100 or 120 points in the last hour of the session. So when we buy the call and put together with an underlying bias, so our underlying bias is on the positive side for bank nifty. That's why we have got a higher call price, that is 51,500 call at around 55.60, and with that same time 51,400 put is around 30. So a movement of almost 80 to 100 points can definitely give a spike of 30 to 40 points in the strategy. So this is the reason that we have come out with this strategy. Generally in the past also historically monthly expiries tend to give some momentum in the last half an hour. So that is the play. Along with that, it helps us to give better risk management also. So we have given this spread in the range of 80 to 85 points. Right now also it is quoting in the similar band. इसमें हमने स्टॉप लॉस बोला है 50 का, अपसाइड में 125 और फिर 150 के टारगेट के लिए. So the name of the strategy is long triangle, and we have already initiated this. So guys, try to play the momentum through the strategy. So I think we are seeing a great spike in the call prices.
Yes, absolutely, and this is the main reason that we have come out with this strategy. So the premium has spurred from 80-85 to 100 as of now. Guys, we will not be taking stock queries for a while. अभी हम लोग बैंक निफ्टी के कॉल्स ट्रैक कर लेंगे हमारे ऑप्शंस जो हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं तो विल नॉट बी एबल टू टेक स्टॉक क्वेरीज फॉर अ व्हाइल वी आर क्लोजली वाचिंग द बैंक निफ्टी एक्सपायरी. So if we see, we have seen a spurt of at least almost 15-20 points from 80-85 to 100 levels, and this is the best part about the strategy. A movement can definitely pull a trigger, and this is the opportunity that we are looking out for. So definitely, guys, we are trying to our level best as soon as we look at the setup wise. So abhi jo jodi hui hai, right now it's around 9900 points. We have seen a 15 to 20 points move, and definitely risk management हमने ध्यान रखा है इस strategy के लिए. थोड़ा सा uptick भी हमने देखा है, so that's a good sign for us. The call and put total right now is around still quoting around 9500 points. So 10 से 15 point का एक swing हमने देखा है, and अभी उस level पे sustain कर रहा है, तो that's a good thing. Along with that, Nifty is outperforming beautifully, whereas Bank Nifty is trying to catch up. So guys, we are trying a level best to play the momentum. So try to make the most of it. Also keep this thing in mind, the bigger trend of the Bank Nifty is in range, so the movement would be small comparatively as to compared to Nifty. So that is the main thing. Yeah, so along with that, we have shared one BTST idea, and insurance space is looking good. HDFC Life, ICICI Pru are looking good from a 15 to 20 days perspective, and broader market has seen a roller coaster ride. So definitely there's too much outperformance, and that's the best part about it. Also, if we see, Inspired, we have seen some cooler from high levels, but the strategy pair is right now again to 85-90 points, and this is the best part about the strategy for Bank Nifty. If we see a tick of another 100 and 150 points on the either ways, definitely we'll see a swing. So पहले हमने swing देखा 80 से 100 का, जिसमें कॉल की तरह हमने मोमेंटम देखा, एंड देन सेकंड स्विंग हमने देखा वापस 100 से वापस बैक टू 80, जिसमें हमने थोड़ा सा स्पाइक देखा पुट में. And generally that's the nature of the Bank Nifty, so we are trying to play through it. Along with that, today we also have Fed meet regarding interest rate, so that will be a key event to watch out for. So overnight sizing is very important, especially for index. However, we have seen a very strong outperformance in mid cap and small cap stocks, so that rally is likely to continue. Along with that, just one more thing I would like to mention, reality space is looking quite promising for the coming series. So reality with DLF and Oberoi originally looks quite strong. And as we have rightly mentioned by Pad also, so strategy also we are tracking. एक swing हमने देखा और उसके बाद अभी back to it's near the cost level, so we are waiting for it. Arpit sir, we are getting a mirror on your screen whenever you are moving to the other screen. We are getting a mirror image, so if you can stay on the charts only. Okay, no worries. Yeah, now it's better. Yes, it is better. Perfect. So I think, sir, we have another query on whether we can buy Nifty call or put for BTSC, depending on the event outcome that you are expecting. Yeah, generally overnight buying we generally avoid suggesting, and especially overnight call and put both buying would be the probability very much low, because in that case we need to see a very massive move on the positive side or on the negative side. However, looking at the bigger trend of Nifty, the bias is positive, as trend is a friend, and we are closely following that. So Nifty, till it holds about 24,800 levels, will continue to be a buy on dip stance for Nifty. Having said that, if aggressive players are there, they can go on the call side, keeping in mind it's an overnight trade, so the risk mechanism will not follow. Along with that, अगर इसकी जगह थोड़े कंजर्वेटिव है तो हमारी कॉल करने की सलाह बाई की तरफ ही सलाह रहेगी, बट उसके लिए हम बोलेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू आप कर सकते हो निफ्टी में, जिसमें आप 24,950 का कॉल बाय करके 25,050 का कॉल सेल कर सकते हो, नेट कॉस्टिंग ऑफ अराउंड 30 to 35 points. Coming back to the Bank Nifty trade, it is the premium is still quoting around 80 points, around 75 to 80 points, जो हमारी buying zone ही है.
80 के अराउंड ही. एक हमने अपटिक देखा towards 100 levels and now it is back to 75-80 levels. So we'll still wait for a couple of more minutes. If we see any major move, then we'll keep the trade open. Otherwise, अगर बड़ा move नहीं आया, then accordingly we'll take a call on it. So Arpit sir, we can take a re-entry, right? If someone is booked at 195, Yeah, we can because take a re-entry. if someone is booked at high levels, definitely, because right now the premium is same around 80 points, 75 to 80 points. बट ध्यान रखिए स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 50 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए. तो अभी प्रीमियम अराउंड वही 75-80 चल रहा है. स्टॉप लॉस रहेगा 50 का, अपसाइड में 100 और 125 के मूवमेंट के लिए. हैविंग सेड दैट, ओवरऑल बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग, सो मूव थोड़े छोटे हैं. सो ट्राई टू कीप डूइंग चर्निंग, दैट वुड बी मच बेटर. एंड इफ यू सी, अब कॉल में हमने डीके देखा और पुट में स्पर्ट देखा है. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्ट्रेटेजी, जिसमें थोड़े से स्विंग्स आने के बाद भी हम पिक्चर में रहते हैं एंड प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है. Having said that, this strategy is mainly for the expiry day because as we are heading close to the expiry, so momentum अगर रहेगा so हम play कर सकते हैं. Yeah. So I think मयूर जी का क्वेरी है रोलर कोस्टर समझा लीजिए. मयूर जी आपने गूगल कर लिया होता, अब तक आंसर मिल गया होता आपको. बट रोलर कोस्टर नॉर्मली आपका जो होता है उड़न खटोला, ऊपर नीचे जो होता है उसको रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं. And as we're seeing, so Bank Nifty after a tick of almost 60-70 points on the upside, it is back to near 51,450 levels. So, but the premium combined, if we still see, it is quoting in range of 75-80 itself. So we'll wait for a couple of more minutes. If we don't see any major momentum, so we'll update on the strategy. So we'll wait for at least a couple of more minutes. In the meantime, insurance space is looking very strong. HDFC Life, ICICI Pru are looking very good, positionally from 5 to 7% upside move. Along with that, auto pack, the entire auto pack, whether it's Bajaj Auto, TVS Motor, it's looking very strong. Reality space with DLF, Oberoi. So there is good outperformance in broader market, and guys try to make the most of it. काफी बार एक्सपायरी थोड़ी डल रहती है, नो वरीज, बट आई वी मेक श्योर दैट कि ऑप्शंस या स्टॉक्स के थ्रू हम वो मोमेंटम को प्ले करें एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू कैपिटलाइज द मोर ऑन द सेम. सो स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है. स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी सजेस्ट की हुई है, वो ओपन है. थोड़ा सा हमने प्रीमियम डीके देखा है, बट मेजर अब तक कोई ज्यादा डीके हुआ नहीं है बिकॉज हमारा बाइंग प्राइस लोअर बैंड पे था. एक बीटीएसटी आईडी हमने ऑलरेडी शेयर किया, आईडीबीआई बैंक. Along with that, if I see overall the market setup wise, कोई major change नहीं है. India VIX volatility index lower है, that definitely goes well for the bulls. And setup wise, Bank Nifty is again back to range in between 400 to 550. So the strategy is still open. We'll just wait for a couple of more minutes. अगर moment major नहीं आएगा, then we'll close it out. Right now the premium is around 72-73 points. And it is more or less near our buying price itself. So we are just waiting for a couple of more minutes. And talking about Nifty, Nifty is like a rock solid, holding well above 24,900 zones. So as someone asked about the buy side for the Nifty, can go on the long side. Keeping in mind event is there. So call sides से आप play कर सकते हो या तो strategy के through play कर सकते हो. Simple bull call spread for tomorrow's expiry. And continuous outperformance you're seeing. So definitely, Parth, we can take a couple of more stock queries and then accordingly we can figure it out. So I think, sir, any specific stock in the sugar sector? We have seen some interest being revived. In fact, we were actually scanning the entire monthly scale of the sugar stock also. So I think if we see the overall monthly setup of Balrampur Chini, and if you see classical higher highs, higher low structures intact for Balrampur Chini, and monthly scale is giving a range breakout about 475, 480 levels. So I think this would definitely open gates for 500, 520 plus levels. So we'd suggest Balrampur Chini would be a preferred pick within the sugar sector and can go long in this stock with keeping stop loss of 460 for an upside move towards 520, 530 levels. So sugar space में as it's a commodity play out, so 500, 520 would be on the card. Monthly setup काफी strong है. Sugar में हमारा preferred stock ये रहेगा. Coming back to the strategy update, right now it's around back to around 70, 72 points, 74 points. So we have seen some spike. It's now back to around
75 to 80 points. So 80, 82. So some spike we have seen on the call side. So guys, try to make exit from this strategy, because as we're heading towards the 3 p.m. tick, so 70, 81, 82, 85, 88, 90, 90, 85. So the pair is around 80, 85, 90. So we have seen a uptick. So if you guys have entered the lower levels, we'd advise to exit at some profit. That would be the best way to do at current levels. Yeah, Parth. So guys, once again to reiterate what Arvind sir said, we are not expecting much more momentum. अगर आप hold कर रहे हो पैर, please book कर लीजिएगा. And sir, moving on to our stock queries, I think metals भी काफी भाग रहे हैं. Sale का हमारा अच्छा call था. Any other stock in metals? Yeah, so if I see metal space में overall हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है मेटल पैक में, बट अगर हम डेली स्केल और वीकली स्केल देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील का एक बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है. मंथली स्केल पे हायर राइज का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. वीकली पे रीटेस्ट किया अराउंड 900 के लेवल्स एंड वी हैव सीन सम बाउंस बैक. सो विद इन मेटल पैक जेएसडब्ल्यू स्टील इज लुकिंग गुड. It's surpassing 50 day mark. Slowly, steadily, can head towards 945, 960 levels. So JSW still is a preferred pick within the metal pack, apart from sale, and it can slowly head towards 950 plus zones with keeping stop loss of 905. And so how does IOC look after the results and everything? Yes, coming back to OMCs are looking very strong. BPSCL, HPCL, IOC, all three are promising. Talking about IOC, it is giving a range breakout on monthly scale almost after 5 months. So we can see uptick towards 195, 200 levels. So aggressive players can go long at current levels also, and some can buy a dip near 177 levels with keeping stop of 170 for an upside move towards 195, 200 zones. So if I just so IOC, OMCs, IOC, BPCL are preferred pick. And I just want to re-update on the strategy. The premium that spurred up to 80, 85 points, now it's back to around 35, 40 points. So this is the art of also executing and exiting the trade. It's very important. When we know, then there is no probability, because वो 80 वाला directly भी crash होके 40 हो गया. So that's why we suggested to exit the trade, because we are not expecting much momentum post 3 p.m. So definitely, guys, some would have able to exit, some would have able to make profit, and some would have some making some losses. But important understanding here, exit करना बहुत important है, rightly exit. So from the BankNifty side, the trade is closed, as you have already suggested a couple of minutes back. IOC is very strong for 195, 200 plus. एक BTST idea हमने already share किया हुआ IDBI Bank, that looks in immediate basis पे भी strong है और positionally भी काफी strong है. Apart from that, insurance space and metal stocks we've discussed. So I think so far so good. And along with that, as we already discussed, NCC morning maybe I think we have played it out right now also again we have been quite bullish. Positionally 365, 370 तक का हमें दिख सकता है, so quite strong. So that's all from our side part. If anything else need to be added, definitely we can add, or accordingly we can just close it. No, sir, I think we will wrap up the session. But before we go, can you please share important levels for Nifty BTST tomorrow? Yeah, so keeping in mind Nifty, our immediate bias is positive. जब तक Nifty 24,800 spot levels के ऊपर रहता है, हमारा bias positive ही रहेगा. Upper band में 25,200, 25,300 के लिए bias positive है. If you want to play long side positions, can go through call option or buy through bull call spreads for tomorrow or next week. Okay, sir. So thanks a lot, sir. It was a difficult day. We understand. Still, we made some small profits. जब भी अगर किसी ने low price पे enter किया था, we made some small profits. So thank you once again, sir. And see you tomorrow at 9:30, everyone. Thanks a lot. Thank you. Thank you all.